We'll start with exercise 4.2. Chetna store paid total GST of 1,500,000 at the time of purchase and collected GST of 1,22,500. 1,22,500. तो इन्होंने क्या किया? When they bought something, some goods they bought, obviously they will buy at a lesser price than what they will sell, correct? So when they bought that time, उन्होंने कितने GST भरा? 1,500,000 rupees. Now when they sold that and they collected GST from the customers, okay? उनको कितना मिला? 1,22,500. So this is what? This is their ITC and this is their output tax. आउटपुट टैक्स ये जब सेल किया तब मिला और ये आईटीसी जब परचेस किया तब. तो वो क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स. तो फॉर्मूला क्या है? जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी. दैट इज 1,22,500 माइनस करेक्ट. तो कितना है आंसर? 22,000, isn't it? So the GST payable by Chetna stores is rupees 22,000. Now ये तो इजी सवाल हो गया. Read the next one. Nazma. Nazma is the proprietor of a firm. Now what is the meaning of proprietor? Proprietor means owner. In short, when there is a single person who owns a business, he is known as a proprietor. He or she is known as a proprietor. For example, ये HKM tutorials, इसका proprietor मैं. Okay, understood? So now she is a proprietor of a firm registered under GST. She has paid GST of 12,500. She has paid GST of 12,500 means ITC is 12,500 and collected 14,750. 14,750 कलेक्ट किए. ये क्या उनका आउटपुट टैक्स है. What is the amount of ITC to be claimed? So what is the ITC to be claimed? 12,500. What is the amount of GST payable? ये माइनस करके जो आएगा that will be the answer. That will be the GST payable. Let's move to the third question. Amir Enterprise purchased chocolate sauce bottles and paid GST for 3,800. तो सबसे पहले है अमीर एंटरप्राइजेस. Okay, उन्होंने क्या किया? They bought chocolate sauce bottles and they paid GST of 3,800. इन्होंने किसको तो दिया? 3,800. उसके बाद में what happened? He sold this bottle to Akbari Bros. तो Akbari Bros, they sold the bottles to Akbari Bros. And from Akbari Bros again they will collect GST. कितना GST कलेक्ट किया? 4,100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Bros and paid GST of 4,500. अभी Akbari Bros ने क्या किया? इसको सेल किया किसको? Mayank Food Corner. Okay. And Mayank Food Corner has given them 4,500 rupees. Correct? Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find the payable CGST and SGST. So CGST and SGST we have seen in the last class. How to find out CGST, SGST. अभी GST payable कैसे निकालेंगे? देखो, for Amir Enterprises. So we'll see for Amir Enterprises. Okay. ITC कितना है? 3,800 and output tax कितना है?
4,100. Therefore tax payable how much? 4,100. लिखेंगे फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स या फिर आईटीसी, दैट इज 4,100 माइनस 3,800, दैट इज रुपीज 300. अभी 300 टैक्स पे करेंगे अमीर इंटरप्राइजेस वाले. बट हाउ मच इज द सी टैक्स मतलब दिस इज जीएसटी. हाउ मच इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2, दैट इज 300 अपॉन 2, दैट इज 150. तो 150 रुपीज उसका एसजीएसटी और सीजीएसटी हो गया. फॉर now this we did for whom? Amir Enterprises, correct? अभी हम देखेंगे अकबरी ब्रोस का. अकबरी ब्रोस का क्या है? फॉर अकबरी ब्रोस ओके, फॉर देम जीएसटी कितना भरना पड़ेगा इनको? आईटीसी इज हाउ मच? 4,100 एंड आउटपुट टैक्स इज हाउ मच? 4,500. सो जीएसटी पेएबल कितना है? जीएसटी पेएबल आउटपुट टैक्स माइनस ITC, that is 4,500 minus 4,100, so that is rupees 400. अभी CGST and SGST you can find out. ये पूरा फॉर्मूला लिखिए, GST upon 2, that is rupees 200. समझ में आया? बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं समझने जैसा. ओके, वेरी गुड. Let's move to the next question. Malik Gas Agency, Chandigarh Union Territory, purchased some gas cylinders for industrial use for rupees 24,500 and sold them to the local customers for 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST. Now see, हमने CGST देखा, CGST देखा, SGST देखा. Now there is one more, that is UTGST. कुछ डरने जैसा नहीं है, सेम ही है. Now this is S stands for what? State. So UT stands for what? Union Territory. So wherever there is Union Territory, वहाँ पे SGST होगा क्या? नहीं होगा. वहाँ पे क्या होगा? क्योंकि वो स्टेट है ही नहीं, वो तो यूनियन टेरिटरी है. उसके लिए UTGST. Means what? UTGST is nothing but just same like SGST in the states, and UTGST is for the union territories. So let's move towards the question now. तो इन्होंने क्या किया? They purchased gas cylinders for the rate of 24,500. तो इनका इनपुट टैक्स क्लेम कितना होगा? ठीक, GST is 5%. तो इन्होंने जब खरीदा तब 5% ऑफ 24,500 भरे होंगे, करेक्ट? दैट मीन्स 5 5 are 25, 20, 22, 10, 12. इतना टैक्स उन्होंने ऑलरेडी भर दिया. नाउ आउटपुट टैक्स, हाउ मच टैक्स दे आर गोइंग टू रिसीव? But they sold it for how much? 26,500. तो उनको 5% of 26,500 रुपीज मिलेंगे, करेक्ट? मतलब ये 0 0 गया, कितना
1325. They will receive rupees 1325. See, they ITC because they purchased it for 24,500. तभी उन्होंने GST भरा होगा. वो उनका ITC हो गया. Input tax because while purchasing 1225 rupees उन्होंने भर दिए. Now output tax when they are selling they will receive 1325. So tax payable कितना है? Here we can say GST payable. GST payable कितना है? Output tax minus ITC, that is 1325 minus 1225, 100 rupees. Okay, that is the answer. Okay, now they are saying कि hence the CGST and UTGST. तो CGST equal to UTGST will be again GST upon 2. बरोबर? That will be 100 upon 2. That is rupees 50. तो CGST UTGST कितना भरना पड़ेगा? 50 rupees each. Next, fifth question. MS Beauty Products paid 18% GST on cosmetics worth rupees 6,000 and sold it to a customer for rupees 10,000. What is the CGST and SGST shown in the tax invoice issued? Now last class only I taught you what is an invoice. Invoice मतलब bill. जो बिल तुम लोग बोलते शॉपकीपर को जाते जाते वो बिल भी दे दो, तो जो बिल मिलता है वो बिल, that is known as, actually it is known as an invoice. So now this beauty products whoever is selling is clever. This fellow has bought it for 6,000. क्योंकि लड़कियां तो ले लेती है कॉस्मेटिक्स बहुत ऐसे कुछ भी रेट्स हो तो ले लेते हैं गर्ल्स. That's why he has bought it for 6,000 but sold it for 10,000 rupees. So therefore let's see now. So इसका ITC कितना होगा? 18% GST है. 18% of how much? 18% of 6,000. 0 गया. 6 8 are 48. 6 7 are 6 plus 4 10 और ये 0. तो इतना उन्होंने GST भरा होगा जब उन्होंने 6,000 को खरीदा. Now they are selling it. So output tax कितना? 18% ऑफ 10,000. सो 2 0 गए, कितना में रह गया? 1800. तो कितना GST मिला उनको? 1800 रुपीज का GST मिला. सो नाउ GST पेएबल इज हाउ मच? इज इक्वल टू, अगेन वही लिखना है अपने को, आउटपुट टैक्स माइनस ITC, दैट इज 1800 माइनस 1080. तो ये कितना रह गया? 800 माइनस 80, दैट इज रुपीज 720. तो ये 720 दिखाएंगे वही इनवॉइस में, करेक्ट? तो देयरफॉर CGST इक्वल टू SGST कितना होगा? GST अपॉन 2, दैट इज 720 अपॉन 2, दैट इज 360. आंसर CGST and SGST shown in the invoice are rupees 360 और rupees 360. समझ में आया? Understood? Now sixth question and seventh question is basically मतलब you have to make tax invoices in that, in the sixth and seventh question. So now drawing that on the board is not feasible. You will get it in PDF format. तुमको मिल जाएगा ये. Basically
we have to see. One is what is B2B and what is B2C. One is B2B and one is B2C. Now B2B मतलब क्या? Now some in the beginning of the class we saw an example wherein we had this company who was selling it to the distributor selling it to the retailer or selling it to the customer. ठीक है, ये ऐसा देखा था हमने. Now see, this is what Bajaj is. What Bajaj is a business, distributor is what, it is again a business. So now it has gone from business to business. तो ये हो गया तुम्हारा B2B. अब ये भी बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, रिटेलर भी बिजनेस कर रहा है. तो ये जो ट्रांजैक्शन हो गया ये भी B2B. लेकिन ये बेचारा बिजनेस कर रहा है कहीं, तो अभी 10th पास हो गया बेचारा रोहित, करेक्ट. तो यहाँ से यहाँ जो आया ये हो गया B2C, बिजनेस टू कस्टमर. Now this was business to business, business to business. So that is the difference between B2B and B2C. Now while you will be preparing invoices for B2B and B2C, तुमको क्या देखना है, B2B में business seller and buyer, okay, दोनों का एड्रेस GSTIN लगता है, इसका भी GSTIN लगता है. क्यों? क्योंकि ये इधर का जो इनपुट टैक्स रहेगा वो इसका आउटपुट टैक्स रहेगा, ये क्लेम करने वाला है वगैरह वगैरह होने वाला है, इसलिए दोनों का भी लगेगा GSTIN. ओके, तो ये B2B को. B2C को क्या है, सिर्फ इसका लगेगा, सिर्फ सेलर का लगेगा. बायर के पास रहेगा क्या, अभी हमारे सबके पास है कि GSTIN नंबर वी डोंट हैव, सो द बायर डज नॉट हैव, सो नो नीड टू मेंशन मच डिटेल्स अबाउट द बायर. लेकिन सेलर का सब कुछ लगेगा अपने को, एड्रेस, GSTIN, all these things will be required. So that is the basic difference between a B2B invoice and a B2C invoice. B2B invoice में details of the seller as well as the buyer have to be mentioned, but whereas when it comes to a B2C invoice, you have to only mention details of the seller. Nominal details of buyer, just the name we can we can write. Okay, thank you students.